हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द बिग पिक। आई होप विश एंड प्रे आप जहां पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो माफ़ी, अपॉलॉजीज़, आपसे मुलाकात करने में हमें थोड़ी सी देर होगी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी देर हो गई है। ईद पे आपसे मुलाकात हुई थी और कोशिश हमारी यही थी कि ईद के फ़ौरन बाद दोबारा आपसे आएँ, मिलें और आपकी मुलाकात आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कराएं। लेकिन आपको पता ही है कि मुल्क के हालात कुछ इतने नासाज थे, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग धरनों की बात कर रहे हैं, लोग धरने पे आके फिर वापस घर जा रहे हैं, पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है तो कोई ऊपर जा रहा है। इतनी गर्मा गर्मी में कुछ फिल्में भी आईं, फिल्में आपने देखी, कुछ अच्छी लगी, कुछ अच्छी नहीं लगी। इतना सब कुछ जब हो रहा था तो हमने सोचा कि आपको बजाय बिग पिक के साथ भी बम्बार्ड करें तो क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक लें, बिग पिक को थोड़ा सा रिजुविनेट करें और कुछ नए अच्छे मजीद चेंजेस करने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो हमने यही कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले शोज आपको ज़्यादा पसंद आएंगे। आपका फीडबैक हमें मौसूल हो रहा था, आपके क्वेश्चन, आपकी कंप्लेंट्स भी हमें मौसूल हुई, जहाँ पे आपने बहुत ज़ोरों शोर से, जोशो खरोश से ये पूछा कि बिग पिक की एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही। ले जी, मैं आ गया हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया, आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ को साथ लेके आया हूँ। आज भी आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही आपकी मन पसंदीदा शख्सियत के साथ, जो कि एक बहुत ही राइजिंग स्टार हैं और सुनने में आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। उनके अलावा भी आने वाले हफ्तों में हम आपके पास लेके आएंगे आपके वो सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिनसे मिलने की रिक्वेस्ट आपने हमसे की है। तो आपने कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं है। आज का शो भी बड़ा मजे का होने वाला है और अगले आने वाले शो भी बहुत मजे के होने वाले हैं। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएं, वो यहाँ पे मेरा एक छोटी सी पट्टी के ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल चलाएं, ताकि आप ऑफ यू जो अभी तक मुझसे डायरेक्ट राब्ते में नहीं है वो भी राब्ते में आ जाएं और अपने फीडबैक कमेंट्स का सिलसिला आप जारी रखें। यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट से हमें बताते रहें आपने किससे मुलाकात करनी है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट भेजें, डीएम करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बिग पिक। आई एम हसन चौधरी। यू हैव टू स्टे राइट हियर बिकॉज ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आपकी बहुत ही फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। कहीं जाइएगा मत। मेरी आज की गेस्ट हैं दुरे फिशर सलीम, और इससे पहले कि मैं दुरे को यहाँ पे बुलाऊं और उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, आई लाइक टू शेयर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर। दुरे लाहौर में पैदा हुई और बाय एजुकेशन शी इज़ अ लॉयर। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो अपना LLM भी परसू करना चाह रही हैं। दुरे के जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, लेकिन उनके वालिद का उनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाने और फिर प्रमोट करने में बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। आजकल दुरे का एक ड्रामा ऑन एयर है जिसके बारे में बहुत सारा फीडबैक आ रहा है, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है। तो दुरे जब आएंगी तो उनसे उस मौजू के ऊपर भी बात होगी, उनकी चॉइसेस के ऊपर बात होगी। दुरे को इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2020 में विद दिलरुबा एज अ सपोर्ट कास्ट मेंबर उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और 2022 में शी इज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्ट्रेसेस और एक्टर्स इन द कंट्री। इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या वजह है, ये पूरी कॉन्वर्सेशन होगी आज की मेरी गेस्ट के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग दुरे फिशर सलीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? नाइस विकिपीडिया इंटरव्यू है ना? बस ऐसे ही मैंने सोचा, टक 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 क्या था, दुरे 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 आ गया सब ऐसे। Every time I meet you, you seem like you're becoming taller. I think my choices of heels are becoming. What is happening with you? Like I don't every know, time either I am becoming shorter or you're growing. I'm turning obsessed with heels lately. There's a new obsession. कहते हैं ना जब आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है तो आप एक obsession बन जाती है आपकी. So I think heels is my new. ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? कभी थोड़ा बहुत आजकल इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट सेंटर प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं। I mean like पहले starting from how you used to have like 5,000 pocket money a month, now you have your own money ना, तो उस पे वो ज्यादा लगता है। तो जूतों पे स्पेंड कर रही हैं आप सबसे ज्यादा?
90% of what Dure is earning is going on 90 nahi, 30. 30. Where is the 70% going? I'm there? saving. I save. You saving 70%? Yeah, I save. Smart lawyer, ladies and gentlemen. And saving for what? Shadi? That's the last thing I will ever save for. But no, save. I'm big on buying property and stuff like this. And like reinvesting and all of those things. Reinvesting and all. So lawyer के साथ साथ business भी आपने पढ़ा है? Business, law. अच्छा A levels में business. तो crypto shipto मतलब invest. वो सारा full scene on है. Are you single these days too? Very much single. You are? You're single as long as there is a ring on your finger. I feel like you are not. I've got 2. So you're not. What does that mean? There's no ring on my finger. You've got 1. I've got 1, but it's not on the hand that it should be. See? Why? Bhabhi? Bhabhi? Why? Why? See, I've got nothing. I just don't like men who are not single and don't wear a ring. Like they should. Married men especially should wear a single all the time. Why? क्या मतलब लेबल लटका के माथे पे लिख के चलना चाहिए हर वक्त के हाँ not available. Not available. Not available. Ring means not available. देखें दुरे जो मुसलमान मर्द हैं उनको 4 की इजाजत है. कोई इजाजत नहीं. अगर एक पहनी भी क्या कोई इजाजत क्या मतलब? मैं कहती हूँ आप एक निभाएं अच्छी निभाएं वो अलग ज़माने थे. आप लोग नहीं निभा सकते 4 शादियाँ. नहीं निभा सकते. किसने कहा? आज का मर्द नहीं. यार मौका तो देखें किसी को. आज का मर्द निभा नहीं सकता. I don't feel. I don't know. I feel like generally men and women both are so intolerant आजकल that it's very difficult. And according to all men perception, औरत संभालना ही बहुत मुश्किल है ना? हाँ. तो 2 कैसे संभालेंगे? और आपको ये लगता है कि एक मर्द 2 बीवियों में उस तरह से जो कॉन्सेप्ट है कि यार के इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल आपने बराबरी का सलूक करके रखना है, तो एक कोई नहीं सही तरह संभाल पाते. Very rare, especially with the economy we have. Petrol is 200 almost now. मतलब क्या करेंगे? दूरदर्शन ने आज एक नया फतवा जारी किया है कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, इसलिए इस तरह की इकोनॉमी में एक मर्द का एक से ज्यादा शादी करना तो नियरली इम्पॉसिबल. बट नो टेल मी सीरियसली दो, शादी का कभी आपने सोचा है या आपने सोचा कि यार कि ये बंदा इस तरह का मेरा होना चाहिए हस्बैंड? नहीं, I think I'm too young for that अभी. बॉयफ्रेंड के बारे में आपने सोचा कि हाँ ऐसा होना चाहिए? पाकिस्तानी औरत का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. पता नहीं चला अभी तक ये बात? नहीं, मुझे तो बताया नहीं किसी ने. पाकिस्तानी women can't have boyfriends. Really? Yeah, no, not possible. तो किसी दिन बस अम्मी अब्बू ने तस्वीर दिखाई कि ये इस बंदे से हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं और शादी हो जाती है, या ये होता है कि वो तस्वीर भी नहीं दिखाई कि अम्मा अब्बा ने तस्वीर आप देख रहे होते हैं 2-3 सालों से. 2-3 सालों से देख रहे होते हैं, फिर आप एकदम से शादी कर लेते हैं. आपके साथ भी ऐसे ही होगा? मुझे नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता, कोई इम्कानात नहीं नजर आ रहे. नहीं, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की ना. आपने ये कहा कि पाकिस्तानी जो खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते, उनकी डायरेक्ट शादी होती है. ऐसे ही है? तो आप कभी ना कभी तो जिंदगी में शादी करेंगी, तो आप भी ये डायरेक्ट जंप मारेंगी शादी में या यू विल? I want to get married eventually. I want to have like kids around me when I grow old, and you know, I want to have that life. But you will not date someone? I will not. I will try not. You will try not? I will try not. I think वो निकाह का अपना ही एक निकाह का अपना. So no dating? No dating. Nikah. Direct nikah. Nikah. I'm gonna Katrina Kaif my relationship. You're going to Katrina Kaif your relationship? Yeah. You do know, na? Katrina Kaif dated a lot of popular. But nobody knew, na? The one she married to. The one she got married to, na? Everybody knew. What I'm trying to say you is that even if you are dating, I feel generally it shouldn't be out there. You know, because dating is something that is very temporary, I feel, unless you lock the deal, you seal the deal. Even that is temporary nowadays. But मतलब मैं engagement के बाद date करो आप अपने fiancé को. Yeah, I feel if you actually want to marry somebody, get it official, get families involved and all of these things. I think that is much more. You don't believe in the concept of dating? I don't. I generally feel it just waste of time, because if there is no prospect of getting married, then what's the point of dating? ठीक है. And so if whenever this show is about me and my shadi. नहीं शादी की नहीं, this show is about you and your thought process and you know your perception of men and of society and social values and all of that. Yeah. So if and when you do end up
getting married to someone, Okay. or if you find a man, what qualities would you want that person to have? I think honest. Good looking, No. शक्ल पे नूर हो. No, नहीं. शक्ल पे तो बिल्कुल ही ना हो. But शक्ल पे नूर ना हो. I feel. What do you mean? Just honest. Honest हो. Because you know, shakal to we all grow old, we all start looking the same, I feel. I think being honest to who you are and being true to everybody around you. I think that is a value that I have. I tend to connect with people, try staying honest with them, even if the field doesn't allow you to be. So I think वो एक honesty एक quality है जो मुझे हर इंसान में बहुत attract करती है. And obviously another one that anybody who lets you be who you are, supports your dream and just lets you do what, because हमारे perception ये होती है ना कि मर्द कुछ भी कर सकता है शादी के बाद, औरत पे ये ना करो वो ना करो. So I think वो, because I grew up in a family where my father never told my mother what to do, so I would not want that to happen with me. So I think these are the two. बाकी तो गुजर जाएगी. बाकी तो गुजर जाएगी. लेकिन आपने ये जरूर पाबंदी आयद कर दी कि कोई शादीशुदा मर्द हजरात आपसे राब्ता करने की कोशिश बिल्कुल नहीं ना करें. शादीशुदा, मंगनीशुदा, डेटिंगशुदा. डेटिंगशुदा also. मतलब already dating and then they approach you. There are na. अच्छा. You're dating somebody and I know you're dating somebody and you're hitting on me. There are some They're men hitting like on this. you? How? Many. Many ना. हाँ. So basically जो dating शुदा, मंगनी शुदा, especially चार शादीशुदा. especially. I basically support these men ना. You know I buys on every शादीशुदा guy. You. Yeah. Everybody on set, especially the married ones or even the co-actors who are married, or even the friends I have around who are married. तो ठीक है. तो शादीशुदा जो लोग होते हैं, दूरे उनको भाई बना देते हैं. भाई zone. I think we all should do that. Bhai zone every शादीशुदा मर्द. I think that is how we will save many marriages. If you know, women don't tend to go to men who are hitting on them when who are married, then वो भी पीछे हो जाएंगे. अच्छा ठीक है. मैं और आप तो दोस्त हैं ना. You're my बड़ा भाई of this industry. Like you're the bada bhai I never had. I genuinely had those feelings for you. Like I also, you know, I take like major career advices from you, don't I? You do? I do. So like that connection I feel for you is very rare. I haven't found that in the industry ever. Public confession. यार ये जो ऑनर मैंने आपको भी दे दी है ना. आपने पब्लिकली मुझे भाई जोन कर दिया है. इससे मतलब आगे अब क्या? I will be very happy seeing this episode of you. So many people. No. उनके दिल तोड़ दिए आपने. उन लोगों के दिल. Best friend. हाँ? You were best friend. Yeah, दुरे ना. मेरे best friend. अच्छा, दुरे, आप लॉ पढ़ी थी. लॉयर आप बन भी गई ऑलमोस्ट. और ये एक्टिंग में आपने जंप मार दी. एक्टिंग में जंप नहीं लगाई थी मैंने. I always wanted to be an actor. I was just not very vocal with my parents about it. But उनको पता था she might end up or you know maybe backstage, not this much front that I am now, but I always wanted to act. Law I did because my khala is a lawyer and growing up I was always impressed by her and how you know she used to carry herself and how she had a valid point for everything that we used to talk about. तो आई थिंक इसीलिए फिर मैंने कहा कि कुछ पढ़ना ही है कि अम्मा बाबा वाज लाइक पढ़ाई के बगैर नहीं जाना, डिग्री करनी है. तो फिर आई वाज लाइक लेट्स डू लॉ एंड आई थॉरली एंजॉयड इट सो मच दैट देयर वर टाइम्स एंड देयर आर टाइम्स दैट आई एम स्टिल प्लानिंग टू गो फॉर माय LLM. अच्छा. बिकॉज आई रियली एंजॉयड दैट part and I also practiced for a year. I interned with Asma Jahangir, all of these. जी. So you know वो बड़ा मजे का एक process होता है. And I think आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए जो बेशक आपका पहले इंटरेस्ट ना हो बट यू डेवलप इंटरेस्ट इन इट. बट अब आप समझती हैं कि आप प्रोफेशनली इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर उस प्लेटफॉर्म या उस पोजीशन पे पहुंच गई हैं जहाँ पे अब आपको लगता है कि ओके आई एम इन इट फॉर द लॉन्गर रन नाउ एज एन एक्टर. जैसे अब आप लॉ की भी आपके दिमाग में है कि आपने LLM करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब एक्टिंग से आपको फुर्सत मुश्किल ही मिलेगी. So to be honest, I love what I do. I lived for this all my life.
The only issue with me is that I try being selective about my roles, and scripts in Pakistan especially are not written what I would eventually want to do. So जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत back to back ऐसी scripts कर रही हूँ और वही मिल रही हैं, तब I might take a break. You know, because longer run के लिए तो हम सब होते हैं, but what you're doing in that long run is what is important for me. ठीक है, ये इंटरेस्टिंग कि यार के ऑफर्स आ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं करती रहूंगी, तो अभी भी कर क्या रही हूँ ये मैटर करता है. There are always and offers तो हर किसी को आती हैं, especially girls, because every 10 years there is a new girl, every 5 years there is a new sensation. तो लड़कियाँ तो आती जाती रहती हैं और ऑफर सबको आती हैं. I doubt there will be any girl in the industry right now who must not be getting so many offers as much as I am. But it's about आपके पास वो privilege है कि आप ना कर सकते हैं. Luckily मेरे पास है, और unluckily मुझे इतनी ऐसी scripts नहीं आती जितनी जैसी मैं करना चाहती हूँ. ये privilege आपके पास इसलिए बिकॉज आपके पास एक बैकअप है, आपने लॉ किया हुआ है, आप लॉयर हैं, मेरे पास ये privilege इसलिए है क्योंकि फैमिली की इतनी अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट है कि आप सपोर्ट है. और दूसरा I do understand. I said this in a talk or a panel discussion that we had at Zebes too, that there are many girls in this industry who are just here to support their families or earn a living for them. I thankfully am not doing that, so that is not my priority कि मैंने 8 ड्रामे करने एक साल में, वरना मेरे पास finances कैसे आएंगे. I do have responsibilities, but alhamdulillah I can fulfill them with other stuff that we do with TVCs and other ongoing stuff. But with drama especially, I am trying and I still try कि कोई ऐसा हो किरदार जो at least as an actor मुझे मजा आए play करने में, not run on the mill. अच्छा, hold that thought. इस पे हम आएंगे. I know you will. इस पे हम आएंगे क्योंकि आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया है. मुझे बताएं, हाउ अवेयर आर यू ऑफ द फैक्ट, जैसे आपने बोला कि हर 10 साल के बाद एक ऐसा चेहरा आता है जिसको ये कहते हैं कि यार दिस इज द यू नो द नेक्स्ट न्यू सेंसेशन एंड द नेक्स्ट बिग थिंग. हाउ अवेयर आर यू that people are saying that about you these days? I am very much aware, but one thing that my khala always taught me, that people will always compliment you for the face you have, for maybe the way you look, but it's who you are as a human being that matters in the long term. So I do understand that this is the talk of the town kind of a thing, but I also know that it's something that is not very long term. 3-4 years down the lane, or maybe 6 months, there might be another one, and I know that I'm very replaceable. We all are. Are you prepared? I am, because to be honest, I've not taken it up to my head. I still, when somebody comes and compliments me, I just take it and I forget it. It's not गाड़ी में मैं यही सोचती हुई जा रही हूँ. Because I do understand, it's a human psychology. नहीं तो दुरे के माइंड में कोई फर्क आया है पिछले? दिलरुबा was your debut, और दिलरुबा में आपका जो किरदार था एक, वो जो हानिया की किरदार, you were sisters? Yeah, I was sister. हानिया की आप बहन बनी हुई थी और हानिया का लीड. आपको मजे की बात बताऊं, मुझे तब भी लगता था मैं हीरोइन हूँ. मैं अली हसन हूँ जिन्होंने मुझे डेब्यू किया था, वो आज भी मुझसे मिलते हैं, उनमें मुझे कोई फ़र्क नहीं उनको मुझ में नज़र आता, बिकॉज मेरे लिए तब भी दैट वाज मी लिविंग माय ड्रीम. टुडे इट्स द सेम. बट दिलरुबा आया 2019 में या 18 में? 2020 स्टार्ट. क्यों यार 2 साल खाली दुरे, just 2 years, 2020 and this is 2022. दिलरुबा came 2020 January. और बीच में कोविड. I shot दिलरुबा and उसके बाद भड़ास I shot in COVID. भड़ास you shot in COVID. Yeah, I remember दिलरुबा आया and एकदम से कोविड आ गया. Like दिलरुबा की तीसरी एपिसोड थी and कोविड आ गया, and then I got a call from नदीम बेग कि भड़ास है and you are coming. तो अगर अब देखो आपका दिलरुबा, भड़ास, परदेस और कैसी तेरी खुदगर्जी ना धूप, 4 ड्रामे आपने किए हैं टोटल, और खाली 2 साल, एंड स्टिल यू आर बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग. यार ये तो लड़की आ गई, ये तो मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े हैं, नॉट बिकॉज दुरे मेरे सामने बैठी हुई है तो मैं बात कह रहा हूँ, बट आई हैव रेड कमेंट्स वेयर पीपल हैव सेड दैट यू आर द नेक्स्ट माहिरा खान ऑफ पाकिस्तान. That's something I've heard a lot, and because I'm a huge Mahira fan,
The only reason I don't like talking about it much is then people start thinking that I'm trying to copy her. But people who know me backstage, they know I know that you do. that's how I am. हाँ. But I don't know. I love Mahira Khan. Like, everybody around me knows how much I adore her. But I don't want to be somebody. Like, I want Mahira to stay. I want me to stay. I don't want Mahira to go and me to come. Right? So I think that is where we need to change the industry. Mahira can exist. I can exist. We can do it together. Like a true lawyer. नहीं, but ये जो 2 साल का अरसा है, अगेन आर यू अवेयर कि यार ये यूजुअल ट्रैजेक्टरी नहीं है भाई. That's what I say. एक्ट्रेसेस के लिए, स्पेशली एक्ट्रेसेस के लिए, एक्टर्स तो चलो ठीक है, छक्का लग ही जाता है क्योंकि एक आपके रोल्स हैं, फिर दूसरे होस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इतने आ जाती हैं. बट फॉर एक्ट्रेसेस ये कि मैं कोई एक्टर हूँ, बन जाएंगे इंशाल्लाह. क्या था सवाल? For actresses. For actresses, it's even more difficult. It is. That's what I say, that I find myself very privileged. When I see girls who started with me or maybe before me and who don't get the kind of roles I still do, I feel myself coming from a very privileged point of view, and I feel luck plays a very important role here. And there's nothing that I have that they don't have. I feel there are many who are better actors, have more vocal range than I have, but they're not where today तो क्या वजह I है? am. I don't क्या know. वजह है? It's luck. I think Allah जिस पे करम करे, और एक luck, I think luck की वो और इन 4 ड्रामों में अगेन ऐसा कोई ड्रामा है भी नहीं जो बंदा बोले यार कि ओ इतना बड़ा रेटिंग्स और ट्रेंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट और वो सब कुछ कर लिया. Yeah, I think I was just telling Umama that कैसी तेरी खुदगर्जी is probably my first drama that is trending. Pardes was very critically acclaimed, but because it was not very commercial, it wasn't very popular commercial. और आपका पेरेंट्स हुआ भी बड़े 10 episodes 10 एपिसोड 12 एपिसोड्स के बाद था. So yeah, I think I've been just lucky. तो कभी बैठ के सोचा है, एनालाइज किया यार कि हाँ ये दिस इज व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, ये मेरे लिए ज्यादा टिक कर रहा है, क्या है मेरी लुक्स के बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे हैं तो मैं ना इसीलिए मैं और हसीन हो जाती हूँ कुछ. मैं बहुत कोशिश करती हूँ. जैसे अभी मैं आपको मज़े की एक बताती हूँ बात, और ये बड़ी वायरल होने वाली है. कैसी तेरी खुदगर्जी में जो पहले 10 दिन हमने शूट किए हैं, शूट से जाने से एक रात पहले मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरी नाक की ये हड्डी फूल गई, इतनी कि मुझे. पहले ये बताएं आप ऐसे जोर से गिर कैसे गई कि आपकी मैं सीढ़ियों से गिरी ना. तो धक्का दिया किसी ने या खुद ही? नहीं, मैं स्लिप हुई. आई ट्रिप अ लॉट एवरी लाइक. इतनी बड़ी-बड़ी हील्स आप पहनेंगे तो ट्रिप ही होना आपने. पहनी हुई थी. आई ट्रिप्ड. अच्छा. आई ट्रिप्ड. तो जब मैं कैसी तेरी खुदगर्जी के दूसरे दिन सेट पे गई तो मैंने फुल वो मेरा स्वेलिंग डाउन और वो सब हुआ था. तो मैंने 4 दिन शॉट किए इतनी मोटी नाक के साथ, और वो आया है पहले 3 एपिसोड्स में, आप सबने देखा होगा. और मैं मेडिसिन पे थी, मैं ब्लोटेड थी, बट मुझे उन्होंने कहा क्योंकि दुरे क्या करें, अब शूट भी करना है बिकॉज हमारे पास डेट्स, नुमान भाई इन सब के बड़े डेट्स मिक्सअप थे. आई वाज लाइक कर लेते हैं, क्या होता है, एक नॉर्मल लड़की है, वैसे ही मैंने मेकअप नहीं करना. और 2 मिनट के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे ऐसे देखा, उन्होंने कहा अच्छा यार अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो कर लो. So just telling about this entire story was only because I am not very much concerned about how I look on screen. My last concern ever is what hair I am doing, what makeup I am doing. I just want to fit the role, that I know. If I am playing a normal Saadi ladki, she should be relatable to the Saadi ladkiyan sitting at home. Fit the role की जो आपने बात की है, और अभी हम क्योंकि एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इस फिट द रोल कॉन्वर्सेशन के बारे में हम उसकी तरफ अपना रुख मोड़ेंगे कि कैसी तेरी खुदगर्जी में जो महक का कैरेक्टर है, हाउ वेल हैव यू फिट इन दैट कैरेक्टर, हाउ वेल हैज द ड्रामा बीन रिसीव्ड बाय द क्रिटिक्स, बाय द व्यूवर्स, बाय योर फैंस. तो ये सारी डिस्कशन होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद. मैं भी यही हूँ, दुरे भी यही हैं, हम दोनों कहीं नहीं जा रहे, आपने भी कहीं नहीं जाना. ब्रेक में जाके पानी का एक ग्लास पी लें या जूस एक पकड़ के ले आएं या कोई भी अपनी मर्जी की कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाल के ले आएं, क्योंकि आगे जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बिग पिक. आई एम हसन चौधरी एंड आई हैव विद मी दुरे फिशा. डोंट गो एनीवेयर, विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.
Ladies and gentlemen, I am Hasan Chaudhary. You're watching The Big Pick. मेरे साथ मौजूद है दुरेफिशान सलीम. ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप सर्टन कैरेक्टर्स में फिट इन कर जाती हैं, जेल इन कर जाती हैं, ऐसा उन किरदारों को बना लेती हैं आप, इतना रियलिस्टिक बना लेती हैं आप कि लोग रोना शुरू कर देते हैं आपकी परफॉर्मेंस देख के. आप रोए कभी? मैं तो नहीं रोया. मेरा आपके साथ रिश्ता आपने बताया ना, दूसरा रिश्ता है हमारा, तो मैं भाई का हमारा we're best friends. तो हमारा रिश्ता, तो इसलिए मैं नहीं रोया आपके साथ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है कि वो आप जैसे आप रोई वैसे वो रोई. सो महक इन कैसी तेरी खुद गर्जी, पहले तो आप ये बताएं कि जब भी आया स्क्रिप्ट आपके पास, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स, कैसी तेरी खुद गर्जी में ऐसी क्या बात थी कि आपने बोला कि हाँ मुझे महक प्ले करना है? अच्छा, कैसी तेरी खुदगर्जी जब आया था तब एक और प्रोजेक्ट मेरे पास आया था और दोनों बड़ी प्रोडक्शन के थे, तो दोनों की स्टोरी ऐसे सिमिलर थी कि अगर इसमें आप लोगों को पहले लग रहा है एक मर्द बहुत टॉक्सिक है, तो उसमें बाद में वो मर्द टॉक्सिक था. आपको लग रहा है अगर मर्द टॉक्सिक है, आपको क्या लग रहा है कि मर्द टॉक्सिक है या नहीं है? मुझे तो लग रहा है इट्स अ नेगेटिव साइकोपैथ कैरेक्टर, इट्स सपोज्ड टू बी टॉक्सिक. ठीक है, अच्छा कंटिन्यू. हाँ, तो वो दोनों स्क्रिप्ट्स थी. So, आप उसमें एक मर्द बाद में टॉक्सिक हो. हाँ, आप किस ड्रामे की बात? I am not going to ever say that if you think I will. You know which drama it is, but the public I know where. तो आप this is unfair ना, you put me on the spot, then people ask me कि अब आप बताएं कि दूसरे कौन से ड्रामे की बात करें. You can't. अच्छा, fair. Right. बताऊं? नहीं. तो अब मेरे पास यही दो ऑप्शंस थे. अच्छा एक सेकंड, वो वाकई में एक बड़ा ड्रामा है और वो वाकई में आजकल ऑन एयर है. अच्छा, तो अब I chose this also because the producer has been offering me a lot of good scripts lately. और मैंने सोचा मैं उसी के साथ अब उनके साथ कर लेती हूँ. तो I picked इसीलिए कैसी तेरी खुदगर्जी, और महक स्पेशली मैंने इसीलिए पिक किया क्योंकि आपने देखा होगा मेरे हर किरदार में बड़ी एक वो स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड लड़की, परदेस हो बेशक, भड़ास हो. दिस वॉज अ वेरी सिंपल लड़की. दोस्त पहली 3 किस्तों में तो कोई एम्पावरमेंट नजर नहीं आई है. मैंने कहा पहले किरदार. हाँ, बट मैं महक की बात, आपने कहा कि आपने पहले वो पिक किए, तो ये वाले आपने कंटिन्यूएशन इसीलिए किया बिकॉज मैं एक सादा सिंपल लड़की, क्योंकि हर लड़की हमारे मुल्क में एम्पावर्ड नहीं है. कैसी तेरी खुदगर्जी वो कहानी है. तो महक एक असल औरत है जो भी है इस दुनिया में, और हमने उनकी कहानी प्ले की है, तो वो भी बिल्कुल ऐसी थी. और शमशेर भी ऐसा कोई है जो इस दुनिया में अभी भी है? बिल्कुल बिल्कुल. जो असली शमशेर की वायरल हुई थी तो हमें क्यों नहीं पता चला कि यार ये इसने, पता नहीं, आप अब्दुल्ला सेजा से पूछें. अब्दुल्ला को मैं आज कॉल करके पूछता हूँ कि जब असली जो शमशेर थे, जो भी उनका नाम होगा असल जिंदगी में, जब उनकी वो वीडियोस वायरल हुई थी, जब वो बदतमीजी कर रहे हैं और गने लेके, देखिए कुछ तो ड्रामेटिक लाइसेंस भी होता है ना, ऑब्वियसली, लाइक आपको एक स्टोरी टेलिंग भी तो करनी होती है. बिल्कुल सही है. तो महक एक आम लड़की की कहानी है, बिकॉज हमारे मुल्क में आज भी हर औरत एम्पावर्ड नहीं है. तो इसीलिए मैंने, और एज एन एक्टर मुझे हर वक्त एम्पावर्ड रोल्स नहीं करने, मुझे कहानी सुनानी है, और वो कहानी एक बहुत मजलूम लड़की की भी हो सकती है और वो कहानी एक बहुत एम्पावर्ड औरत की भी हो सकती है. हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं आपके ड्रामे के ऊपर, तो वो हम देखते हैं कि लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है. चलाएं जी. एमन जहांगीर ने ये लिखा है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है, नेक्स्ट क्वीन ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री एट दुरेफिशान सलीम. ये जो मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मायरा खान ऑफ द इंडस्ट्री, नेक्स्ट क्वीन ऑफ द ड्रामा इंडस्ट्री, जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं आपके लिए, आपका क्या रिएक्शन होता है? फ्रेंड्स, फैमिली में, घर वालों पे, क्या आप मतलब उन्होंने सेंस किया कि यार पिछले 6 महीनों साल में दुर्रे का एटीट्यूड बड़ा फर्क हो गया? नहीं हुआ ना एटीट्यूड मेरा फर्क हुआ, उनका तो और मुझे लगता है अजीब हो गया. बिकॉज जब मैं घर जाती हूँ तो अभी हमारी मासी हमें छोड़ के चली गई रमज़ान में, तो मैं हमेशा से नवाबजादी थी, मैं पानी भी उठ के नहीं पीती थी. तो मेरी बहन और मैंने मिल के बर्तन धोए हैं, बिकॉज वो हम दोनों मिल के साथ करते थे, और वहाँ कोई आप स्टार नहीं होते, अपने घर में कोई स्टार नहीं. और दोस्तों के बीच में? दोस्तों में तो बिल्कुल नहीं होते आप, कोई नहीं. अच्छा, वो तो मुझे बड़ा करते हैं ट्रोल, लाइक आप लोगों से ज्यादा मुझे मेरे दोस्त ट्रोल करते हैं यार. अच्छा. हाँ. हमने कब किया ट्रोल आपको यार? नहीं मतलब वैसे एक जनरल ट्रोल किस बात पे करते हैं ट्रोल? क्या कहते हैं? एनीथिंग, लाइक इफ आई एम नॉट अ वेरी क्राई बेबी जनरली, सो अगर मेरा कोई क्राइंग सीन देख लेंगे
وہ ویسے مذاق اڑاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں آپ کو, ایسے کریں گے. ایک اور کامنٹ جی, اگلا کامنٹ مزمل راجپوت, ایک غریب باپ کو اللہ بیٹیاں نہ دے ایسے معاشرے میں. یو سی نا کامنٹس لائک دیز. آپ نے بولا کہ اٹس اے ریئل اسٹوری, یہ ڈرامے سے کا اتنا امپیکٹ ہوا ہے کہ غریب باپ کو اللہ بیٹیاں ہی نہ دے, یہ امپیکٹ ہے نا ڈرامے کا. No, I do understand and I do realize that ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے, آپ کی آڈینس آپ سے جو پیار بہت کرتی ہے تو وہ آپ کے ایکشنس اور وہ جو اسکرین پہ دیکھ رہی ہوتی ہے ان سے انفلوئنس ہوتی ہے. میں بچپن میں بہت ہوئی ہوں بہت سی چیزوں سے, بٹ آئی آلسو فیل کہ آپ کو کچھ کہانیاں لینی چاہیے بیکاز یہ ریئل اسٹوری ہے, ہم ایک ریئل اسٹوری دکھا رہے ہیں. یس آئی ڈو ریئلائز وی شوڈ ہیو پلیڈ سم ٹریگر وارننگس کہ آپ ایک وارننگ چلا دیں اس سے پہلے یا کچھ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ول ریپیٹ اینڈ ریٹریٹ مائی پوائنٹ کہ ہم ایک اسٹوری بتا رہے ہیں, ہم ایک جو کہ اصل میں ہو چکی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک اصل کہانی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جی, اور آئی تھنک دا اونلی وے وی لیکڈ از کہ ہم نے یہ چلایا نہیں, ٹریگر نہیں چلائی, بیکاز آبویسلی پھر جن کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ شاید آپ کو یہ اتنا کھل کے لائسنس نہیں دیتے, بٹ یہ ایک اصل کہانی ہے. اور میرا اس کہانی پہ رجحان بھی اسی لیے اتنا زیادہ ہوا تھا, رجحان ماما ول بی ویری ہیپی رائٹ ناؤ, کہ یہ اصل کہانی تھی. اٹ واز بیسڈ آن ٹرو ایونٹس. انم شیخ نے لکھا the most pathetic drama you'll ever watch. بھائی everybody has their own opinion. جہاں میں وہ والی اوپینین لیتی ہوں جس میں لوگ مجھے بہت سراہتے ہیں, پریز کرتے ہیں, وہاں میں یہ اوپینینس بھی لے لیتی ہوں. جب یہ اوپینین آتا ہے آپ کیسے ڈیل کرتی ہیں, کیا آپ کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ Obviously as you know I am kind of a sensitive human being, I do feel bad, but لیکن میں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ میں اس انڈسٹری میں بلونگ کرتی ہوں جہاں ہر کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوگا. میں ہر چیز ہر وقت 100% ٹھیک نہیں کر سکوں گی, میں ہر کیٹیگری کو پلیز نہیں کر سکوں گی. یو ڈو ریئلائز نا ہمارے ملک میں بھی بہت قسم کی عوام ہے, وی کانٹ کیٹر ٹو آل دا آڈینسز. تو اس طرح کے کامنٹ سے کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی ایک ڈیسیجن کو ری تھنک کیا ہو, اب تو ہو گیا بٹ ان ہائنڈ سائڈ آپ نے سوچا ہوگا یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں ویسے بڑی انڈیسائسو انسان ہوں, میں ابھی ڈیسیژن لے کے بدل جاتی ہوں, بٹ ایک دفعہ جب میں نے ایک اسکرپٹ سائن کر لی ہے تو آل مائی پروڈیوسرز نو وہ اسکرپٹ میں بیمار ہوں کچھ ہوں, وہ میں سیٹ پہ آنا ہوتا ہے, اس کو میں نے 100% دینا ہوتا ہے اور وہ میں نے کرنا, وہ کرنے کا. جسٹ فار فن 95 فور فن خان, ان کو فن کا بہت ہی زیادہ شوق ہے. نو میٹر واٹ یو سے بٹ درے فشر از اے ورسٹائل ایکٹریس, لک ایٹ ہر ٹون, شی ہیز نیور یوزڈ دیٹ ان اینی ادر ڈراما. 3 تو ڈرامے کیے بھائی درے نے 3 تو ڈرامے کیے, بٹ اگین پیپل ہیو نوٹس یور ورک ان کیسی تیری خود غرضی. اور جو کامنٹس ڈالنے I have used a tone that's not my tone. میں ایسے بات نہیں کرتی جیسے مہک بات کرتی ہے, اس کی بیس بہت سلو ہے کیونکہ وہ بہت دھیمے اور لڑکی ہے اور بہت دھیمے لہجے میں وہ گفتگو کرتی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں, وہی بات ہے, I still don't find myself a good actor. Every time I go on a set, I'm asking my co-actors and sometimes اتنے اچھے co-actors ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شاید ہم یہ کہہ دیں وہ offend نہ ہو جائیں. جیسے ابھی میں وہاج کے ساتھ شوٹ کر رہی ہوں تو کل ہی ہمارا بڑا مشکل سین تھا, میں نے اسے کہا وہاج مجھے بتاؤ میں یہ کیسے کروں. So I am وہاج ان کراچی تھی اس تو وہ وہی بات ہے نا, آپ میرا ہمیشہ اپنے ایکٹرس کو ایکٹرس کا بڑا اچھا کیمراجی ہے, وہ مجھے سمجھاتے ہیں اور میں سیکھتی ہوں, اور آئی اسٹل فیل کہ مجھے بہت سیکھنا ہے ابھی. اور وہ یہ ٹون شون کی بات جو میں اب کر رہی ہوں یہ شاید مجھے اب جا کے پتہ چل رہی ہے, پہلے نہیں پتہ تھی. دانش کے ساتھ آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے شوٹ کرنے کا سیٹ کے اوپر؟ ہاؤ ہیز اٹ بین؟ It's been great. As I always have a great camaraderie with all my co-actors. اللہ کا شکر ہے مجھے ہمیشہ ملے, اتنے اچھے ہیں شاید, but amazing experience with Danish too. وہی دانش بھی is not the kind of actor who tell you یہ کرو وہ کرو, وہ اپنا ہی فوکس کریں گے زیادہ. یا دانش سے ریئل لائف میں میرا بھی اتفاق نہیں ہوا ملنے کا, وہ اصل زندگی میں ایسے ہی ہیں مطلب شور شرابہ. اچھا مزے کی بات ہے, وہ اصل زندگی میں بھی ذرا بڑے دھیمے مزاج اور بڑے دھیمے تو نہیں ہے, مطلب ڈراموں میں نہیں ہے وہ, لیکن وہ ایسی وہ بولتے ان کا روب اور ان کی آواز میں وہی وہ ایک والیوم ہے. ہاں, اور میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں نے یہ بھی کامنٹ کیا کہ ہاؤ کین درے چوز دس character? How do you respond to that? I will just respond it in the same terms that Dure, apart from all respect to the audience who
love me so much and respect me so much for the craft I do, but مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ایز این ایکٹر ہمیشہ ایک امپاورڈ لڑکی نہیں کروں گی. میں نے اپنے وہ ایکٹر کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے نا. تو جہاں مجھے کوئی ریئل اسٹوری ملے گی جس میں ایک کمزور لڑکی ہے اور اس کی ایک جرنی ہے, میں وہ پلے کروں گی. ایز این ایکٹر آئی ول آلویز وانٹ ٹو ڈو مائی ورک. آپ لمٹ کیوں کریں اپنے آپ؟ یہ فون کال بڑی وائرل ہوئی یار ان کی, ابھی بھی بہت وہ کر رہی ہے, اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جب وہ میں نے اور دانش نے اس بارے میں بڑی مزے کی, وہ کہہ رہا ہے میرا نام لو شمشیر. جم میں ہم تھے اور ہم نے کی یار یہ کیا, کیونکہ جب بھی آپ کو پتا ہے نا فون ٹاکس ہوتی ہیں, تب نہ دانش کی فون ٹاک ہوئی تھی, میں نے اپنی کی, اور ایک بندہ ایڈی دے رہا ہوتا ہے آپ کو لائنس, تو نہ ان کو پتا تھا میں نے کیا ریئیکشن دینا ہے. میں تو ایک معصوم سی لڑکی پلے کر رہی ہوں. آپ پہ کسی نے انگلی اٹھائی بھی نہیں ہے. وہ اب وہ کام ہے ایک ڈائریکٹر کا, ایک پروڈکشن ہاؤس کا. ایز این ایکٹر واٹ وی کین ڈو لائک ان دس ڈراما, دا اونلی تھنگ آئی کین ٹیل یو از, میری اتنی ان پٹ تھی کہ اگر کوئی سین ہوتا ہے جس میں تھپڑ کھانا ہوتا ہے, میں کہتی ہوں میں تھپڑ نہیں کھاؤں گی. اچھا. تو اس ڈرامے میں بھی ایسے سین تھے جب میں نے کہا میں تھپڑ نہیں کھاؤں گی. آپ کی بات مانی گئی؟ مانی گئی. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, ڈائریکٹر پروڈیوسر کا کام ہے. اگین ا فیئرلی نیو ایکٹر, ایک فیئرلی نیو ایکٹر اگر یہ کہہ رہا ہے سیٹ کے اوپر. مجھے بھڑاس میں ایک تھپڑ پڑا تھا, اس کے بعد سے میں نے سوچا تھا میں نے تھپڑ نہیں کھانا. تو پردیس میں بھی ایک سین تھا, لیکن شکر ہے جو پردیس کی پروڈکشن تھی اور جو ڈائریکٹر تھی ان سب کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی ہے, اور وہ بہت عفان کا کیریکٹر مارتا تھا نہیں, ویسے کوئی تھا, تو وہ بڑے سینسیبل لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں. اچھا, کسی اور کیریکٹر سے بھی نہیں, یہ بھی نہیں کہ باپ وہ تھا, وہ جو گوہر والا تھا نا, وہ جو ایسے رک جاتا ہے. ہاں ہاں, تو وہ پروڈکشن ہاؤس بڑی سینسیبل تھی, انہوں نے کہا نہیں کیوں تھپڑ ہم مارے. اس موضوع کے اوپر بات کریں گے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد. میں بھی یہی ہوں, درے بھی یہی ہیں, آپ نے بھی کہیں نہیں جانا. سی یو آفٹر اے ریئلی شارٹ کمرشل بریک. جی میں ہوں حسن چودھری, آپ دیکھ رہے ہیں دا بگ پک. درے فشاں سلیم یہیں پہ ہے, میرے ساتھ موجود ہیں. ایک تو آپ کا درے فشاں سلیم بندہ, آپ کو درے نہیں کہہ سکتا. آپ مجھے درے فشاں کہتے ہیں کبھی آن آف اسکرین؟ میں تو درے کہتا ہوں آپ کو. درے آپ نے کہا تھا نا, درے فشاں مینس eruption of pearls. eruption of pearls, and durre means basically a eruption. خالی eruption. Listen to me. Eruption. So آپ نے ایک بات کی کہ آپ کا ماشاءاللہ 2 سال میں ایک پوزیشن ایسی آ گئی جہاں پہ آپ اگر کچھ بات کہتی ہیں تو پروڈیوسرز آپ کی بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور بات سنتے ہیں. آئی نو فار اے فیکٹ کہ بہت سارے ایکٹرز جو 10 12 15 سال سے کام کر رہے ہیں, جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے اسکرپٹ میں چینجز کی, وہ بھی نہیں اس کو چینج کرا پاتے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے اور دوسرے ایکٹرز کی نہیں سنی جا رہی؟ ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ صرف میری بات سنی جاتی ہے, لیکن دوسرا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. اچھا, آئی جنرلی تھنک بیکاز آئی ڈونٹ کریٹ ایشوز آن ادر ایسپیکٹس آف دا اسکرپٹ. میں بہت مائنر چیزوں پہ کہتی ہوں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں سینس بن رہی ہے اس چیز کی. اگر اس سین میں اس چیز کی سینس نہ بن رہی ہو تو مجھے وہ ڈالنا بے تکا لگتا ہے, بیکاز ایز این ایکٹر وہ ان پٹ مجھے دینا چاہیے, کیونکہ وہ میں کردار پلے کر رہی ہوں نا. تو مجھ سے زیادہ اس کردار کے بارے میں شاید ڈائریکٹر کو اتنا نہیں پتہ, کیونکہ میں اس کی وہ جرنی لے کر آ رہی ہوں. آئی ہیو بین لکی کہ مجھے ڈائریکٹرز ایسے ملے ہیں جو مجھے بیٹھ کے, بھٹی بھائی اسپیشلی, وہ اتنے اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں, وہ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈسکس کرتے تھے, درے تمہیں لگتا ہے مہک ایسے کرے گی. تو وہ ایک سمجھ ہمارے بیچ میں ہے, اور وہ وہی بات ہے نا کہ ڈائریکٹر اور ایکٹر دونوں کا انپٹ ہے, خالی میرا نہیں ہوتا. ڈائریکٹر مانتا ہے وہ بات تو آگے چلتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے وہ کی ہیں جو کہ مجھے لگتا تھا مجھے نہیں کرنا چاہیے, بٹ ڈائریکٹر واز لائک نہیں یہ ضروری ہے, اینڈ آئی ہیو سیڈ یس ٹو اٹ. تو آپ خود ہی آئی لاہور سے کراچی, میں نے آڈیشنز دیے, خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہاں جاؤں گی, آڈیشنز دوں گی. آئی آڈیشنڈ ایوری بڈی. بگ بینگ اسٹل ہیز مائی آڈیشن, سگما تو میکس فن آف دیٹ آڈیشن, بٹ ایوری بڈی ہیز مائی آڈیشنز. میں یہی بات سب نئے ایکٹرس کو بھی کہتی ہوں کہ اف یو ہیو دا پریولیج ٹو سے نو ٹو تھنگس دیٹ یو تھنک یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو. میں نے کیا ہے وہ, میں نے بہت نہ کیا ہے,
مجھے تب ہاں ملی ہے. میں نے 3 بری اسکرپٹس منع کی ہیں تو مجھے ایک اچھی. وہی بات ہے نا, آپ کے پاس وہ لبرٹی اور پریویلیج ہے میرے کہ وہ آپ نہ کر سکتے. So that's the I think deciding factor. وہ لوگ جن کو کام کی ضرورت ہے اس لیے بھی کہ انہوں نے اپنے گھر چلانے ہیں, وہ پھر نہ نہیں کر سکتے. اور پھر جب آپ کا بہت سے لوگوں کا یہاں بریڈ اینڈ بٹر یہ ہے نا, اور مے بی دا اماؤنٹ آف منی آئی گیٹ ٹوڈے فار ا ڈرامہ از ناٹ گیون ٹو everybody who is new and all of those things. So I think وہ privilege ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو زیادہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پیسے ملتے ہیں, آپ کی مرضی کے پیسے ملتے ہیں؟ نہیں وہ تو کسی کو نہیں ملتے, مجھے لگتا ہے آپ کو ملتے ہیں. ہاں کسی کو نہیں, آپ تھوڑا 19-20 ہو جاتا ہے, بٹ الحمدللہ جتنے مل رہے ہیں میں خوش ہوں. الحمدللہ. امپورٹنٹ تھنگ از الحمدللہ. Is this industry generally a welcoming place? آپ سے تو یہ سوال سب سے زیادہ بنتا ہے کہ 2 سال ہوئے اور کیسے ریسیو کیا. سب نے بہت پیار دیا ہے یار. I will be lying if I say no, but کیا وجہ ہے یار؟ I don't know. All the production houses I went to have literally hugged me. Literally, I was their baby. So I don't think so. Like وہی نا, I tell you, everybody at Sigma treated me like their own. تو وہاں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر now I'm doing with iDreams, وہاں بھی عبداللہ بھائی, everybody is amazing. تو میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا نہیں کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں. لیکن ہاں بہت سی لڑکیاں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے بات اس کے بارے میں کرنا اور یہ کہنا کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوتا از لکنگ ڈاؤن اپون دیم. سو آئی فیل لائک ہراسمنٹ ڈز ایگزسٹ. میرے ساتھ اٹ از انڈسٹری میں نہیں ہوا, لیکن اس سے پہلے ہوا ہے, لا فیلڈ میں ہوا ہے. اچھا. تو پیپل ہیو ہراسڈ, اینڈ ہراسمنٹ از آلسو دا ٹون یو مائٹ یوز وتھ somebody, the text you send them that is inappropriate. I find that harassment. If you're crossing a line that I won't let you cross, that is harassment for me. آپ کی مرضی کے خلاف اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسا میسج بھی بھیجا, ٹیکسٹ بھی کیا, وہ ہراسمنٹ جو کہ آپ نے جس کی ان کو اجازت نہیں دی, اور آپ کو پتہ ہے ایز اے پرسن آئی ول ناٹ اپریشیٹ دیٹ. آئی تھنک دیٹ از ہراسمنٹ. تو یہ اب بتائیں ایک اور بات کہ بہت سارے جو لڑکے لڑکیاں جو چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کا حصہ بنے, بائی دا وے ہراسمنٹ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے, بٹ لڑکوں کے ساتھ بھی لڑکوں کے ساتھ بہت ہوتی ہے. آئی نو مینی میل فرینڈس who have been harassed to a level that they're like, یار ہم کیا کر رہے ہیں ہم انڈسٹری میں. I know so many men who actors they're like, یار یہ ہم سے یہ مانگ رہے ہیں, وہ ہم سے یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اسکرپٹ دیں گے. So there are men who are harassed. Men are being sexually harassed in the industry. Yeah, there are, definitely. It happens everywhere around the world. یہ سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ جو لڑکے لڑکیاں چاہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کا حصہ بنے, بہت سارے تو پہلے سے ہی ڈرتے ہیں, بہت ساروں کے پیرنٹس ڈرتے ہیں, ان کی فیملی ڈرتی ہے, ان کے دوست کہتے ہیں کہ یار کہ یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے. یو نو ماڈلنگ کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں, ایکٹرز کے بارے میں بھی سیم کانسیپٹ ہوتا ہے. ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ See, I can't talk about the modeling fashion industry because I'm not part of it. But what I can talk about the acting industry is کہ ہر جگہ نیکی اور بد یہ ہوتا ہے. I can't completely say نہیں ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. نہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ نہیں it's a very bad field. I will just say that know your limits, know where you should fall, where you should stand up. اور آپ احتیاط سے بھی چلیں گے تو اگر آپ کے ساتھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. آپ احتیاط نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. لیکن I will just advise to every young girl or young boy coming here, come with an education. When your parents tell you, if you have the privilege again and the resources to get a degree, get that. And I'm not saying it because backup, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جب آپ ایکسپوئر لے کر آتے ہیں باہر کا تو آپ یہاں بہت کمپوزڈ اور ایک الگ قسم کے انسان ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, پڑھائی سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے. موونگ فارورڈ ناؤ, آفرز تو پتہ ہے مجھے آ رہی ہیں لیفٹ رائٹ سینٹر, تو کیا ڈیسائیڈ کیا آگے؟ اب یہی بات ہے نا, جب آپ کو اتنی آفرز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کو ہوتا ہے یار میں کیا کروں, یہ بھی اچھا. فلموں کی آ رہی آفرز؟ فلموں کی تو آئی تھنک میرا پہلا دلربا ڈیبیو نہیں ہونا تھا, میرا فلم ڈیبیو ہونا تھا, اگر میں وہ کر لیتی. بٹ وہی بتائی بھی مجھے بات پہلے, یہ نہیں بتائی. You also know that film and you were like اچھا شکر ہے نہیں کی. اچھا اوکے. بٹ نہیں, بٹ وہی فلم کا بھی میرا یہی ہے کہ فلم میں جب بھی کروں گی اس میں میرا ایک امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے. ہماری فلم بہت ہیرو ڈریون اور بڑی میل سینٹرک. بٹ آئی آلسو نو کہ آپ کا جو اپنا امیج ہے وہ ایک بڑی اسکرین کی ایکٹریس کا ہی ہے. مطلب اگر آپ کو یہ موقع ملتا کہ بٹوین ٹی وی اینڈ فلم
I would have film, definitely आप film. I would have chosen film, but I also realize the kind of economy we have today. Films don't have a horizon. Economy की बड़ी tension है तोरे को. बहुत है. पेट्रोल 200 रुपए. हाँ ना, क्योंकि 200 का पेट्रोल है तो 800 की टिकट हर इंसान लेके कैसे सिनेमा पहुंचेगा? बिल्कुल सही बात है. तो और फिर ये 5 फिल्में साथ लगा देते हैं. 5 फिल्में साथ, और फिर आप 5 फिल्में बनाने से अच्छा एक अच्छी सारे बजट डाल के बना लें ताकि वो क्वालिटी और निकल आए, rather than quantity. I believe in quality. और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस मुल्क में जहाँ इकोनॉमी ऐसी है हर इंसान 800 की टिकट लेकर आएगा, जब सिनेमाज ही इतने हैं. कोई और खाली टिकट नहीं, 900 की टिकट, फिर पॉपकॉर्न, फिर ड्रिंक्स, के बगैर मैं तो देख वो नहीं सकती. कैरेमल पॉपकॉर्न के बगैर देख सकते हैं आप मूवी? मैं आई कांट डू विदाउट कैरेमल पॉपकॉर्न. अच्छा, क्या अगर मैं जिंदगी में कभी बहुत आपको फिट नजर आऊंगी तो वो मैं अपने लिए आऊंगी. मुझे आज तक इस बात से कोई खासी वो फर्क नहीं पड़ा अगर किसी ने मुझे कहा है थोड़े शेड कर लें पाउंड्स. बोलते हैं लोग, बहुत लोग प्रोडक्शंस बहुत बोलती हैं, बट आई जनरली फील आई शुड लुक लाइक अ प्रोडक्शन नॉर्मल. क्या कहती हैं कि वेट कम करें, आप मोटी हैं. देयर मेनी प्रोडक्शंस हु टेंड टू से यू कि आप फिट हो जाएं, थोड़ी ना फिट हो जाए. ये मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अल्फाज का क्या वो इस्तेमाल करते हैं. वो बड़े अच्छे, बड़े तमीज़दार लहजे में करते हैं, बट कहते हैं क्योंकि कहते हैं हमारी ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती. तो मैं वही तो परसेप्शन जरा चेंज करना चाहती हूँ कि एक कोई स्किनी लड़कियों के आपको क्या अलावा लगता है ऑडियंस एक्सेप्ट करती है जब जो फीडबैक आपको अपने इंस्टाग्राम पे मिल रहा होता है, पिक्चर्स के ऊपर मिल रहा होता है? मुझे बहुत वेलकमिंग ऑडियंस होती है. बल्कि अभी वहाँ मुझे कहती है दुरे वो आपने ना एक वेट लिफ्टिंग की वीडियो और पिक्चर लगाई हुई है और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप इतनी पतली हो गई हैं, मुँह इतना सा आ गया है. तो मेरी ऑडियंस मुझे लगता है मैं चाहती नहीं मैं ज़्यादा पतली हो जाऊँ. इसका हाथ थक गया बेचारे का. या अच्छा, तो आने वाले ड्रामों में कुछ अभी साइन किया या नहीं किया हुआ? You're going to see me and Bahaj in Jur. It's a mystery thriller. You, Bahaj and Tuba and is in it too. There are many other people. और mystery thriller. Mystery thriller. ओह निकला नहीं जा रहा मुंह से. Who done it type? नहीं आती. हाँ बिल्कुल. अच्छा, murder mystery. हाँ. अब क्या सब बता दो? Nice. Bahaj and you are my 2 favorite people, as you must know. Bahaj is a good guy. I love Bahaj. I love Bahaj. How's your experience? अमेजिंग. बहाज और मेरा पहला टीवीसी बहाज के साथ था. अच्छा. तो मुझे तब से जानते हैं, तो वो आज तक सिर्फ वो ही मुझे. वी हैव अ ग्रेट कैमराडरी. थैंक यू दुरे. थैंक यू सो मच. ये एक ड्रामा अभी आ रहा है और अभी आपने कोई साइन नहीं किया? आई हैव साइन 2 बट वी कांट टॉक अबाउट इट. अच्छा, 2 और साइन कर लिए मैं? आई हैव दिस ईयर. तो अभी एक की शूट चल रही है, 2 और आपने साइन कर लिए हैं. वी आर गोना स्टार्ट शूटिंग इंशाल्लाह एंड दैट इज अ नैरेटिव दैट यू हैव नेवर सीन इन पाकिस्तानी. अच्छा. ड्रामा दैट इज अगेन द सेम प्रोडक्शन हाउस अब्दुल्ला सेजा. अच्छा. बट इंशाल्लाह यू गाइस आर गोना सी दैट. ओके, आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि नैरेटिव दैट यू हैव नेवर एवर सीन इन द पाकिस्तान. नो, नॉट इन द रीसेंट टाइम्स. योर कैरेक्टर और जनरली द एंटायर कॉन्सेप्ट. ठीक है. और उसके अलावा भी एक और है. देयर इज अनदर वन. ठीक है. Thank you so much Dure. Once again it's been an absolute pleasure. और कुछ बातें हुई हैं जो हम कटवाएंगे इस इंटरव्यू में. ये इंटरव्यू में कुछ नहीं कटेगा. जो हम कोशिश करेंगे कि हम It's gonna be as honest as. हम उनको काटें. But wish you all the best for all your future projects and inshallah ताला I hope कि बहुत सारे आपके जो fans उनकी जो expectations हैं, viewers की expectations हैं, मेरी expectations हैं कि आप inshallah you indeed become the next big thing of Pakistan's entertainment industry. That's our hope, that's our wish and that's also our prayer. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और thank you. आप लोग अपने feedback से हमें आगाह करते रहते हैं. As always, इस वीडियो के नीचे भी और जनरली भी अगर आपने टीवी पे देखा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम को कि मेरी इंस्टाग्राम की पट्टी चलाएं यहाँ पे, ताकि वहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकें, फॉलो करें, अपने कमेंट से, अपने डीएम्स के थ्रू बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा. मेरी आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते. तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा. माय नेम इज हसन चौधरी एंड यू आर वाचिंग द बिग पिक. थैंक यू दुर्रे.